So we had started talking about the concept of business services. Within that, we had in fact discussed the concept of banking services. We talked about the features of banking services, why banking services are important. Within that, we had already talked about the concept of the different types of banks, the central bank, the commercial banks, the public sector banks, the special category banks. So we had talked about the different types of banks already. One thing which we had stopped about was the new models of banking which have recently come into the picture. These were not the banks which were existing till the year 2016, 2017. These are the banks who have been given the licenses very recently. In fact, one of the prominent feature for the financial inclusivity. Now, what is this financial inclusivity? If you want your banking and other financial systems to reach to the core of your country, to the base of your country, for that purpose, if you are taking the efforts, that means you are trying to include almost the whole of your population within that financial world. That is what is called as financial inclusivity. The government's Jan Dhan bank account system, the government's linking of your ration card to your bank system, these all things are the part of those financial inclusivity. क्योंकि पहले क्या हुआ करता था, पहले गवर्नमेंट को डायरेक्टली एंड यूजर तक पहुंचना by itself was a task. The government had to take the efforts, government had to depend on the intermediaries for the purpose of reaching up to the end person, end user. But because of the financial inclusivity model, the government could reach to the end user in the current scenario. Now the ration card are being linked to your Aadhaar card. The Aadhaar card is linked to your mobile number. The mobile number is linked to your bank account. And as a result of that, what has happened now is you have got the control or you have got the direct connect. इनफैक्ट इसका सबसे ज्यादा जो फाइनेंशियल इंक्लूसिविटी की गई, इसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ वो हुआ ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पैंडेमिक. Why government is able to prominently confidently say that we have contributed this much to the agriculture, we have contributed this much to the unemployment sector, we have contributed this much to the rural sector. Why they are able to confidently say is because they are having the concrete data for that. They have actually contributed that 500 rupees per month to the rural population. They have actually contributed rupees 2000 per quarter to the small farmers. And why are they able to contribute? I'm having the evidences of that. Why are they able to contribute this is because they have got it made deposited directly into the bank account of those individuals. This is what you call as financial inclusivity. कि आप अपने रूरल एरिया तक through the banking channels, through the financial world पहुंच पा रहे हो. In fact, earlier than the small finance banks or the payment bank concept, we used to have something called as the microfinance companies.
MFCs. Now, what these microfinance companies used to do, they used to provide the funding of small level. किसी किसान को 5 करोड़ रुपए की कभी आवश्यकता नहीं होती है। एक किसान को अगर बीज बोने हैं तो उसे मैक्सिमम 15 से 20,000 रुपए की आवश्यकता होती है। If that farmer would go to the local baniya and ask for a loan of 20,000 rupees, उसकी जमीन दिखवा देता था। There was a huge exploitation from the local population. And to avoid that, the microfinance companies started getting developed. हालांकि बाद में पता चला कि उनमें भी फ्रॉड, उनमें भी डिफॉल्ट चल रहे हैं, but originally they were working fantastic. One of the prominent name that you would be understanding, niche is something which is providing the services to a specific category of people. That is called as niche. Niche and mass. This is how that particular concept works. When you are trying to cater to the maximum population possible, it is called as catering to the masses. And when you are trying to cater to the population of a very specific category, that is called as niche customers. Okay. So in the microfinance, there was this company called as SKS Microfinance. This was developed by Mr. Vikram Akula from the Andhra Pradesh. It was the company developed, and they would give the loans of 5,000 rupees, 3,000 rupees, 10,000 rupees at the standard market rates. They were not having the intent of getting the people into the kind of glitch. वो कोई ऐसे डॉक्यूमेंट्स पे साइन नहीं करवाते थे जिससे उनकी प्रॉपर्टी इनकी हो जाती थी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होते थे। अब इनके लिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती थी? they were not able to repay in the large chunks. तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस जैसी कंपनियों ने क्या किया था? They started getting the money, they started getting the repayment from these people on daily basis. They had appointed the people. They would go to those people, those small borrowers, and they would get the repayments done in the, say, 10 rupees, 50 rupees, 100 rupees per day. जितना आप दे सकते हो उतना देते रहो. And by that way, it was not pressurizing them as well. This is how that company worked. And as the government observed that these microfinance companies are within the control of certain people, there has to be some public accountability. For that purpose, the RBI gave the licenses to certain microfinance and NBFC institutions who are now called as the small finance banks. They would not give the large funding like 5,000 crore rupees to the people like Vijay Mallya, but they would give the loan of rupees 5,000 to the small farmer. That's the basic purpose of the small finance banks. So what is the small finance bank? I hope you have understood the background from where the small finance bank concept came. Am I going good for everyone? Can you raise hands for me? Yes, thank you. ये मैंने अंगूठा दिखाने के लिए नहीं बोला था, मैंने रेज हैंड के लिए बोला था.
भाग्यश्री, ऐसे मेरे को तो अंगूठा दिखा रही सुबह सुबह, ठेंगा मेरे को कुछ नहीं समझा। वेल, sarcasm apart, I appreciate that. Don't worry on that part. So let's talk about the concept of small finance bank. क्या है ना, इतने दिनों के बाद मैंने तुमको सुबह सुबह उठाया और प्राची, वो यहाँ पे ना मेरे पास सारे नाम आते हैं। नहीं, नो प्रॉब्लम भाग्यश्री, जस्ट मेकिंग फन ऑफ दैट। मैं वही कह रहा था कि एक तो मैंने तुमको इतने दिनों के बाद इतना सुबह उठाया, और वो भी तुम इतना सुबह उठ के आ गए, तो मुझे अच्छा लग रहा है। तो लगना तो चाहिए ना। और फिर वो तुमको ऐसा सुबह सुबह उठा के बैठा हूँ, और फिर तुम लोग ऐसे ही मतलब वो प्रवचन सुन के, जब आत्मा का मिलन परमात्मा से होता है तो जयराम जी की तो बोलना ही पड़ेगा, नारायण हरि। आई एम नॉट इंटरेस्टेड टू डू समथिंग लाइक दैट, कि मैंने मेरे प्रवचन खत्म की और इमीडिएटली तुम लोग जाके घर पे ढूंढ रहे हो यार हमारा बेड कहाँ है। बस अभी हमें जो नशा चढ़ा हुआ है ना, हमें जाके बस सोना ही है, इतनी नींद नहीं भरनी है भाई। वी हैव टू गेट फ्रेश, राइट? एनीवेज, लेट्स कम बैक। So the small finance banks are the type of niche banks in India. Niche banks, as I mentioned earlier, they are not interested to cater to the masses. They are interested to cater to the restricted category of customers. That's why they are called as the niche banks in India. These are the banks with a small finance bank license and provide basic banking services of accepting the deposits and lending. They cannot issue the demand draft. They in fact, simple terms, they cannot perform all the secondary services. Their core area is only to focus on the primary functions of the banks, that is accepting the deposits and providing the loans. The aim behind these banks is to provide financial inclusion to sections of economy not being served by other banks, such as small business units, small and marginal farmers, micro and small industries, and unorganized sector of the entities. Now, this is very much important. For whom you have incorporated, for whom you have provided or you have brought these small finance banks, is for small business units, small and marginal farmers. ये क्या हुआ? ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा था। ऐसा पहली बार हुआ है 17-18 सालों में। ऐसा 17-18 सालों में बोलते थे। मेरे पास आईपैड 3 साल से ही है, नहीं 5 साल हो गया। Small and small industries and unorganized sector. So these are the sectors for whom basically the small finance bank has been provided. These are to provide the financial inclusion, very important term. These are the niche banks in India, and they are having the basic banking service of accepting deposits and giving the loans. The existing NBFCs, microfinance institutions, and local area banks can apply to become a small finance bank. These banks can be promoted either by individuals, corporates, trusts, or societies. Why? Because these are basically into the small finance. और अगर आप small finance की बात कर रहे हो तो वहां पे मैक्सिमम लोग जो काम करते हैं वो इंडिविजुअल्स ही काम करते हैं, या फिर कोई एनजीओ या फिर कोई ट्रस्ट काइंड ऑफ काम करती है, एंड दे आर प्रोवाइडिंग द फाइनेंसेस, एंड दैट्स व्हाई दोज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. They're established in as the limited companies in the private sector under the Companies Act of 2013. Now it is not 1956 anymore. They are governed by the provisions of RBI Act of 1934 and the Banking Regulation Act of 1949. There is no territorial restrictions. इसीलिए अगर आप पुणे जैसी सिटी में भी हो तो पुणे जैसी सिटी में हो तो भी आपको एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक,
रुपी स्मॉल फाइनेंस बैंक, ऐसी बैंक्स देखने को मिलेगी. Why? Because there is no restriction. They can do the business anywhere that they want. Whereas अगर आप बैंक्स की बात करो, नॉर्मल बैंक्स की बात करो, तो उनको लाइसेंस उनके रेस्ट्रिक्टेड एरिया में दिया जाता है. जिस एरिया के लिए लाइसेंस दिया गया है उसी एरिया में उनको काम करना होता है. एंड इफ दे वांट टू एक्सपैंड, they will be required to take the separate license for their respective branches, which is not the case for the small finance banks. Do they come under the MSME scheme? Understand, my dear friend Atar, these are not the organizations which are doing some manufacturing or trading or processing or something like that. So they are not MSMEs. MSME matlab kya? An industry, a unit, a business, trader, manufacturer, etc., which is basically carrying out the production activity, trading activity at a smaller scale, whose investment into the plant and machinery, whose investment into the goods is less than the specified limits. They are called as the micro, small and medium enterprises, MSMEs. Whereas these small finance banks are to support the MSMEs. They are not the MSMEs. Am I clear? And therefore none of the scheme of MSME is applicable to them. हाँ, गवर्नमेंट जो स्कीम्स लॉन्च करती है वो इन बैंक्स के थ्रू पब्लिसाइज करती है, प्रमोट करती है, पब्लिक को प्रोवाइड करती है. ऑलराइट, yeah, so they were set up with the twin objectives of providing institutional mechanism for promoting rural and semi-urban savings. This is very much important. जरूरी नहीं है कि आपके जो स्मॉल स्केल या रूरल सेक्टर जो है वहां पे सिर्फ लोन ही आवश्यकता होती है, वहां पे भी सरप्लस होते हैं, पर वहां का सरप्लस बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है, रिस्ट्रिक्टेड अमाउंट में होता है, उसको भी कैटर करना जरूरी है. एंड फॉर दैट पर्पस दी स्मॉल फाइनेंस बैंक्स वर्क वंडर्स. सो दे कैन एक्सेप्ट द डिपॉजिट्स एंड try to channelize those savings into the market. Provision of savings for unserved and underserved section of the population. Unserved means जहां पे banking facilities available ही नहीं है. Underserved means banking facilities available हैं, but those banking facilities are not sufficient as compared to the requirement of that particular area. अब मैं on the other day I had visited a place. मैं ऐसे ही कुछ काम से गया था, एक जमीन देखने गए थे एक्चुअली हम लोग. तो जब मैं वापस आ रहा था तो the person accompanying me was telling me that here there is a town. एक बाम्बू शेड काइंड ऑफ था, बाम्बू की पूरी खेती थी और उसके अंदर वो कहने लगा यहाँ गांव है. मैंने कहा गांव दिख तो नहीं रहा है. कहता ज्यादा नहीं, 20-25 घर होंगे. And like that, there were almost 20 different villages at the distance of not more than say 5 or 6 kilometers. 5-6 किलोमीटर पे एक एक गांव बसा हुआ था और एक गांव में मैक्सिमम 20 से 25 घर थे. इस तरह के वो विलेजेस एस्टैब्लिश्ड थे. अब ये जो विलेजेस होते हैं, इन सब 20-25 विलेजेस को मिला के जो नेशनलाइज्ड बैंक्स होती हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक होती हैं, प्राइवेट सेक्टर तो यहाँ आता भी नहीं है. फॉरगेट अबाउट द कांसेप्ट ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और फॉर दैट मैटर द एचडीएफसी बैंक. Even the banks like Bank of Maharashtra, the State Bank of India, the Bank of Baroda, these will also not incorporate their branches there because they know very well that they will not be getting the kind of business from there. So for that purpose, they don't incorporate the units there. और इनकॉर्पोरेट करते भी हैं तो 30 विलेजेस मिला के एक जहां पे टाउन कमेटी होती है वहां पे जाके ब्रांच खोलते हैं और वहां पे उन पर्टिकुलर टाउन, उन विलेजेस वालों को
सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो दे बिकम अंडर सर्व्ड और अनसर्व्ड। अब यहां पे सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा? तो वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड कर रही थी। अब माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर दिया गया है, वो माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को एक अपर लेवल दिया गया है, एंड दैट इज व्हाट वी कॉल एज द स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ताकि वो ऐसे छोटे छोटे गांव जहां पे 20-25 घर हो, वहां पे भी जाके अपनी एक्टिविटीज कैरी ओवर कर पाए। इसीलिए उनका एरिया ऑफ रेस्ट्रिक्शंस भी नहीं रखा हुआ है। Supply of credit to small business units, small and marginal farmers, micro and small industries. In fact, मैं कह दूं आपको कि इनके पास बहुत ज्यादा तजुर्बा होता है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होता है टू डेवलप हैंडलूम्स या हाथ से बनी हुई चीजें, बहुत सारी चीजें बना सकते हैं लोग। अब उन चीजों को बनाने के लिए, उन चीजों को उन चीजों के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है, उसके लिए भी इनके पास पैसा नहीं होता है। हार्डली लगेगा कितना इन्वेस्टमेंट, 5,000 रुपए स्टॉक में, बट वो 5,000 भी नहीं होता है। तो वो 5,000 जो है वो इन स्मॉल फाइनेंस बैंक्स या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन से मिल जाता है, एंड फ्रॉम देयर दे कैन कैरी आउट देयर बिजनेस एक्टिविटीज। दैट इज एन एब्सोल्युटली अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। व्हाई अनऑर्गेनाइज्ड? बिकॉज वो ना कोई उनके पास शॉप एक्ट होता है, ना ही उनके पास किसी तरह का रजिस्ट्रेशन होता है। दे आर हैविंग द नॉलेज, they are having the expertise in something and they are carrying out the activities in that. Like मैंने अभी आपको जो एग्जांपल बताया कि वहां पे बाम्बू के पीछे एक टाउन था जहां 20-25 घर थे, तो वो बाम्बू में से बहुत सारी चीजें बनती हैं। अब ये जो बहुत सारी चीजें बनती हैं, वहां के लोगों को बहुत अच्छी तरह से आता है, दे हैव गॉट द एक्सपर्टीज इन दैट, सो दे कैन सेल इट, दे कैन मार्केट इट, बट उसको बनाने के लिए जो टूल्स, मशीनरी की जो रिक्वायरमेंट है, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है अगेन, एंड फॉर दैट पर्पस दे नीड द फंडिंग। And that's where these small finance banks help a lot. On what basis these banks give loans to small farmers? Mortgage? They give it on personal relations. These are absolutely unsecured loans. इसीलिए तो उनकी जो रिकवरी होती है, वो रिकवरी ऐसे ईएमआईज में नहीं करते हैं। They do the recovery on daily basis. कि आज तेरे पास 50 रुपया पड़ा है तो 50 रुपए दे दे, आज तेरे पास 100 रुपया पड़ा है तो 100 रुपया दे दे, एंड बाय दैट वे दे वुड गेट इट रिकवर्ड। दैट्स हाउ दीस पर्टिकुलर थिंग्स वर्क, ऑलराइट। बेसिकली इन लोगों को बनियों के चंगुल में से बाहर निकालने के लिए ये स्मॉल फाइनेंस बैंक्स बहुत अच्छा काम कर रही हैं। हालांकि लुकिंग एट द सिनेरियो, इट मे बी अ काइंड ऑफ ट्रबल फॉर देम आल्सो, but if they are having the good controls, then they can have the survival over a longer period of time. कि क्या होता है ना, कई अब आपने 10 लोगों को लोन दिया और वो 10 में से 4 लोग अगर डिफॉल्ट कर गए और 6 ने ही आपको सर्व किया, तो यू मे बी इन ट्रबल। 10 में से अगर एक बंदा डिफॉल्ट कर रहा है तो यू मे सर्वाइव। So these are the kind of things which will be proved over the period of time. Over at a later period, we'll be able to understand that how these all works. All right. Then comes the concept of payment bank. In fact, हुआ यूं कि हमें ना मोबाइल रिचार्ज करना है, उसके लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चाहिए था। हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना है, हमें एक से दूसरे बंदे को पेमेंट करनी है, इसके लिए कुछ प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता थी। और उस समय पे we got the concept of wallets. In fact, e-wallets is the in thing now. Everything, every person is using. भाई वो लिखा हुआ already है एयरटेल पेमेंट्स बैंक। तो ये जो ई प्लेटफॉर्म्स की आवश्यकता पड़ने लगी, इनको कहते हैं फिनटेक। These kind of companies, these organizations which are providing you the services into the financial world, they are basically called as the fintech, financial technology company. अब ये जो फिनटेक्स है, लाइक पेटीएम, एयरटेल,
For that matter, the Indian Post has also become the payments bank. What they are doing is they cannot lend the money. They cannot perform all the functions that a bank can. They can accept the deposit from their customers, but subject to maximum of 1 lakh rupees. And they can, on behalf of them, provide the remittance, the payment services. And that's why these are called as the payments bank. अब क्या हो गया है, अब आपके पास मार्केट में इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं कि आप एक नहीं तो दूसरे प्लेटफॉर्म को उठा के पेमेंट कर सकते हो. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, WhatsApp or for that matter Google Pay are not the payments bank. They are having the special permissions because Google has already got so much of database of our country. In fact, forget about our country, they've got the database for the whole world. On the other day, I was just trying to apply the Google Lens on an individual, and it immediately recognized that individual to Prashant Bhushan. That means Google आपके जो आप जो फोटोज अपलोड करते हो, उसमें जो टैगिंग करते हो, उस पे AI, the artificial reality, the artificial intelligence has been applied, and as a result of that they have got your database. आजकल जब आप कभी भी इंस्टा पे, फेसबुक पे कोई पर्टिकुलर फोटो, फेसबुक तो भूल ही जाओ, तुम लोग तो मतलब फेसबुक के वर्ल्ड के से बहुत बाहर हो, बट इंस्टा पे जब आप फोटो अपलोड करते हो और जब टैगिंग करने जाते हो तो इमीडिएटली इट पिक्स अप द नेम ऑफ दैट पर्सन. Why it is picking up the name of that person automatically? Because the Google AI, or for that matter Insta AI, not Google AI but Insta AI, that is Facebook AI, has already recognized that face and its features, and that's why it is giving you the name of that person. So इतना उनके पास डेटाबेस है, इसीलिए उनको परमिशन दी गई है that you can go for the payment services. So on the same lines we are having the payment bank services being provided by the different payment banks in the current scenario. So it is a new model of banking. It is conceptualized by the Reserve Bank of India. The main aim is to offer the financial services to small businesses and low income people. In fact, आप आपके गूगल पे अकाउंट से, आप आपके पेटीएम को यूज करके कितना पेमेंट कर रहे हो, उसके हिसाब से सारे के सारे क्रेडिट कार्ड कंपनीज, पर्सनल लोन कंपनीज को डेटाबेस मुहैया कराया जा रहा है, प्रोवाइड किया जा रहा है कि ये बंदा ज्यादा पैसा यूज कर रहा है, ये ज्यादा कार्ड यूज करता है, इसको कैटर करो, इसके पास जाओ, इसको बोलो कि तुम क्रेडिट कार्ड लो, तुम ये खरीदो, तुम वो खरीदो, एंड ऑल दैट. That's how these things are working nowadays. इनफैक्ट न्यूज़पेपर में एक आर्टिकल आया था that these fintech companies have become the agents for the credit card companies and the loan providing companies. They are capturing the data and providing it to these credit card companies and the financial world companies. In fact, they are providing these things to the ऑनलाइन सर्विसेज कंपनीज ऑल्सो कि ये बंदा क्या क्या एक्चुअल यूज करता है. तो आपके ऊपर इतना खतरनाक ट्रैक लगाया गया है विच यू कैन नॉट अवॉइड. इफ यू वांट टू अवॉइड इट, यू नीड टू स्टॉप डूइंग द ऑनलाइन एक्टिविटीज, एंड दैट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस. हम लोग
मार्केट जाते हैं आजकल, पानी पूरी भी खाते हैं तो वहां उसका क्यूआर कोड ढूंढ रहे होते हैं, भाई साहब तुमको 20 रुपया देना है, तुम्हारा क्यूआर कोड किधर है, मेरे को पेमेंट करना है. दिस इज हाउ दैट पर्टिकुलर थिंग इज वर्किंग नाउअडेज. वी हैव गॉट यूज्ड टू, जेब में वॉलेट नहीं हो चलता है, मोबाइल होना इंपॉर्टेंट है. एंड बेस्ड ऑन दैट वी आर वर्किंग. And that has become the strong database for these organizations. So it is like any other bank, as it can carry out most of the banking functions such as remittance services, mobile banking, ATM cards, net banking, etc. But it is not allowed to issue the loans and credit cards. It is not allowed to issue the loans and credit cards. आप कहोगे सर वो Amazon Pay credit card कैसे आ रहा है? If you'd be observing, it is a credit card issued by the ICICI Bank, co-branded with Amazon Pay. Which means what? Card issue करने वाली कंपनी ये ICICI है and not Airtel. So they are not allowed to issue the loans. That's because they are only accepting the deposits and providing the payment services. It cannot accept the demand deposits. It can accept the demand deposits only up to rupees 1 lakh. That's another point of difference between the other commercial banks and the payment banks. It can accept the deposits only up to 1 lakh rupees. The examples they have already provided: Indian Post Payment Bank, Airtel Payment Bank, Paytm Payment Bank, etc. are some of the examples of the active payment banks in the current scenario. I hope the things are quite clear now for these two things. Deliberately, I had left these two things on the other day. Otherwise, सिर्फ पढ़ के सुनाना होता तो मैंने उसी दिन खत्म कर दिया होता. I didn't want to that. इसीलिए मैंने उसको पेंडिंग रखा था. I hope these two concepts, that is small finance bank and the payment bank, is clear for everyone. Yes. Now the next thing that comes is the different functions of the banks. Within that, primary functions, which will be just running through acceptance of deposits and granting of loans. किस तरह के deposit accept कर सकते हैं और किस तरह के loans provide कर सकते हैं. We'll focus more on the secondary functions in the form of agency and utility services. What those functions are, that we'll be discussing in tomorrow's lecture at 8 a.m. So we'll be meeting tomorrow at 8 a.m. Thank you for today.